Good evening everyone and welcome to OASHUB. So this would be the first part of the revision series of international relations, the affairs as well. So let's begin with the new topic, that is the India UAE economic comprehensive economic agreement jahaku ame kohu SEPA. Now SEPA is बहुत important कारण SEPA ऊपर गोटे क्वेश्चन आसीबार चांसेस अधिक अछि कारण एई वर्ष तुम देखिबो इंडिया हैज साइंड SEPA with UAE, India has signed SEPA with Australia as well. तो दीटा कंट्री सहित आम देखा SEPA साइन करिछि आ सबुठ इंपोर्टेंट कथा हला कि Australia is part of Quad and UAE is part of I2 U2, that is the West Asia Quad. So that means we are developing the strategic relationship with the different countries. So we are now focusing to the east and west. आम कहवा सो आम देखा दैट मीन्स I2 रो गोटे कंपोनेंट होचे आम कहवा UAE. मिडल ईस्ट जहाँ को आम कहते मिडल ईस्ट सब डेवलप्ड एंड ऑल्सो मोस्ट वाइब्रेंट सोसाइटी आम कौटी देखे UAE. And UAE तुम जानते हो one of the what highest remittance also India दुनिया सब highest remittance India collect करूची, that is the Saudi Arabia and UAE रो. तो comprehensive economic partnership हमें SEPA जहाँ को कहते साइन करा जाए जी कहाँ से UAE. India eyes 100 billion investment after the free trade pact. तो ये गोटे कौन फ्री ट्रेड पैक्ट सब इंपोर्टेंट कथा ये गोटे फ्री ट्रेड पैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रो मीनिंग कौन तो आम टिके आगे जानिबा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी रो मीनिंग कौन दैट मीन्स इट वुड बी ए फ्री ट्रेड एंड ओवरऑल दैट मीन्स जोटा कि ऑल अराउंड सिंपल आई वुड से ऑल अराउंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट all around economic engagement like investment, trade, e-commerce, service sector सब जिनस को लिया it would be comprehensive से कहा जाउची all around engagement of economic relation with UAE कारण UAE सहित एथिपे हम रिलेशन को हमको स्ट्रांग करियर अछि because if you need a strong presence in the Middle East and जदि तमे चाइना को कंट्रोल करबा ପାଇଁ चाहो if you want to counter the China to counter the Pakistan, that means you must have a good relation with the UAE, which is one of the what fastest growing economy in the Middle East. तो Middle East जेहेतु UAE गोटे stronghold करके रखिछि and UAE रो economic power जदि हम देखो बहुत ही खास ए रीजन रे तेणु करके we need to have a good relation with the UAE and we are having target what 100 billion investment after the free trade agreement with the UAE. And UAE सहित हमें देखिबा because तुम भी जानते कथा north south economic corridor will also pass through the UAE. So that would be touched like this. So that हम देखो FTA will lead to the UAE investments in the but national infrastructure pipeline कारण UAE पाखरे बहुत ही ज्यादा पैसा अछि जानछो तमन है ना तो इन्वेस्टमेंट वर्थ 100 बिलियन और मोर देन दैट भी हे पारे so that means as we are signing the pact with what that is the UAE, so that will provide the opportunity for the investment in the infrastructure Indian national infrastructure pipeline तो तादरे इन्वेस्टमेंट करियर गोटे चांसेस मिलिबो तो ये जो FTA रहबो जोटा कि हमें सेफा कहते करंटली है ना जहाँ भी हो तो आम देखा केते आसुची देखो सेक्टर वाइज यदि अपॉर्चुनिटी आम देखा सब रोड एंड ब्रिजेस रेलवे अर्बन तो फोर्ट्स एवरी सेक्टर देयर विल हैव अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट and we need the investments from the different countries because government does not have enough money to invest in these parts. So we are developing, that is why free trade agreement करुचे comprehensive economic pact sign कराउचे so that economically जो हमारा target रखा है 5 trillion so 5 trillion economy केमती करियो by doing this by doing the free trade agreement where we will have benefit. That does not means that we will sign the free trade agreement with China where the trade deficit will be double ହେଇଯିବ तो आम चाइना सहित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करबानी दोज कंट्री विथ देम वी विल डू द फ्री ट्रेड ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैक्ट वेयर आवर इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड तो तेणु करके जदि हम देखा यूएई सहित जदि हम इकोनॉमिक रिलेशन को डीपनिंग करोचे सो दैट व्हाट वुड बी हैपन वी विल हैव गुड रिलेशन विथ द मुस्लिम कम्युनिटी जोटा कि आउ गोटे तुम देखिबो कि जो हमर अछि कोन ऑल इंडिया मुस्लिम प्लेटफॉर्म जो कम्युनिटी जो ग्रुपटा अच्छी से भी आम प्रेजेंस बढ़ो जहाँ भी हो द अपॉर्चुनिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द यूएई वुड बी इन दिस सेक्टर सब आम जगह देखिपर देन आम देखा फॉर एग्जांपल ट्रेड डेफिसिट आम कहे किसी लोग आपको क्रिटिसाइज कर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ट्रेड डेफिसिट बढ़ी जापे जमती कि आसियान सहित आम ट्रेड डेफिसिट अच्छी है ना तो जहाँ भी हो दैट मीन्स ये तो आम डिस्कस करवा दैट वुड बी द बट आम कह डिफरेंट आंसर हो हाँ क्रिटिकल एग्जामिन करवा जदि तुमको कह डिस्कस द क्रिटिकल एग्जामिन द सेपा साइंड विथ यूएई हाँ ठीक अच्छी लेट्स ए लिटिल बिट ऑफ ट्रेड डेफिसिट वुड बी वाइडेन बट इकोनॉमिक एंगेजमेंट ऑयल आमको मिल
we will have more investment, हमको investment अधिक मिलिबो, we will have more energy security को हमें ensure करि परिबा, because energy demand हमर के 70 to 80% oil is coming from the Middle East. So we need to have the oil, that is the energy security. And if you are having good relation with the UAE, that means that will ensure some sort of the economic हमें कहबा or energy security को establish करि परिबा. On the top of that, UAE होची गोटे क्लोज एलाई ऑफ यूएसए, तेणु जेहेतु वी आर ऑल्सो गुड फ्रेंड ऑफ यूएसए, तेणु गोटे आमर कॉमन फ्रेंड से ही कॉमन फ्रेंड हो, तेणु करके दरकार. प्लस मिडल ईस्ट को गेटवे, सिंपल मुख कि गेटवे टू मिडल ईस्ट. जदि मिडल ईस्ट रे स्ट्रांग होल्ड आमर फुटप्रिंट बढ़ाइबार अछि, यू नीड टू हैव द गुड रिलेशन विथ यूएई, बिकॉज यूएई इज द मोस्ट वाइब्रेंट सोसाइटी, जोटा कि इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी बहुत ही ज्यादा. So economic cooperation in UAE was the India's third largest trading partner in the 2021 and 2022. तो देखो UAE was the India's third largest trading partner. That means ये बहुत बड़ा partner आमा पाई. And the second largest both export and import देखी दिया. India रे second largest trade partner. Second and third तुम जहाँ भी लिखी पड़ो. So that in terms of हमें देखो second largest for the both export and import. That means we are having pretty good economic relation. That is why we are doing the comprehensive economic agreement. UAE accounts 6% of the India's total export and 7.3% of the import the last financial year. That means we are having pretty good relation in terms of financial cooperation and the areas. The UAE investment in India, that is 11.67 billion, which makes is the 9th biggest investor in India. India रे मध्य से माने बहुत इन्वेस्ट करूछंती, तेणु करके हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमर बहुत सारा होची. Under this revamped FTA strategy, government has prioritized at least like the 6 countries region to deals with in which the UAE figures the top of the list. है ना, ये तो मैं कहबा top of the list अछि. The comprehensive agreement between India and United जोड़ा कि हमें एमिरेट हम कहबा साइन, so that आमर इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़िबो. जेमति मु कहथली एनर्जी कथा कहथली कि आमर एनर्जी कोऑपरेशन बढ़िबो. एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया, आउट के पूर्व कहथली वी नीड एनर्जी बिकॉज 70 to 80% ऑयल इज कमिंग फ्रॉम द मिडल ईस्ट to India, as that means we are dependent on the energy security or the कारण बिना एनर्जी तो इकोनॉमी ग्रो करि परिबो नाही. That is why plus north south economic corridor will be passes through that region as well. बिकज तुम जानिछ जो तापी प्रोजेक्ट थिला, तापी प्रोजेक्ट को कौन क्लीयरेंस बामे कहबा जाको पैसेज दो नाही पाकिस्तान, जोटा कि तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया थिला, ये तो हमर होई परला नाही. तेणु करके हम कौन कहछ बाईपास करबा कौन ईरान देखि हमको न पड़िबो, अदरवाइज यूएई ओमान देखि हमें यूज करिया पड़िबो. सो दैट इज व्हाई दैट आल्सो मेक्स इंपोर्टेंस फॉर इंडियन डायस्पोरा एज वेल. 3 million Indians are living in, that is what, harmoniously in the UAE, because UAE रहुची कोन dynamic society, orthodox no dynamic society. So you are having more than 30 lakhs people out there UAE. तेणु करके भी हमें सेवा करूचे, ये भी हमर गोटे कोन हमर डिफेंडिंग पॉइंट हे गेला. केते हमें देखो दैट इज 47 to 50 बिलियन हमन करो जो टोटल अर्थ हमें रेमिटेंस देखबा, रेमिटेंस भी आसुची है ना, ये भी गोटे बहुत बड़ा पॉइंट हम लिखबा. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक फिगर्स, outward remittance from the UAE is 47.5 billion in 2021 and compared to the 43.3 billion 2020. Then India's West Asia policy मु तुमको कहली कि gateway to the West Asia, gateway to the Middle East, ये रहइबो तमरा UAE, that occupies the central place. पूरा होल इंडिया रो जेमति जदी हमें कहिबा हमर जेमति लुक ईस्ट पॉलिसी अछि, सेमति लुक वेस्ट पॉलिसी रो हमर लुक वेस्ट पॉलिसी रे आसे यूएई. ध्यान से मन को कथा. सो यूएई रो डिफरेंट क्वेश्चन बनि परबो, इधर तुमको रेमिटेंस ऊपर क्वेश्चन आसले ये डेटा को यूज कर परबो. सम मिलियंस, 3 millions and 47, or let's say on an average तुमको के $50 billion we are getting from the UAE. We are getting what, let's say fifth largest partner of oil, and we are the second largest in terms of the what remittance. 3 million Indians are then second largest trade partner. So these are the data you can use when it comes to the UAE. So हमरो आसुची वर्ल्ड बैंक अनुसार वेस्ट एशिया पे हमको गेटवे टू द वेस्ट एशिया, तांस हमको दिस वुड बी द गेटवे. एंड द लुक वेस्ट पॉलिसी रो सेंटर रे आसे तमरे UAE, बिकॉज लुक वेस्ट पॉलिसी रे वी विल मूव अप टू इजराइल. हमको इजराइल जाई देबार अछि, तो इजराइल जाई कमति जो हम गेटवे वुड बी लाइक दिस, एंड दैट इज द तो ये रहबो UAE. सो वेस्ट एशिया पॉलिसी मु तुमको कहली कि लुक वेस्ट पॉलिसी जाको हम कहि परिबा.
तो ये रहिबो हमर पूरा यूएई रे रिलेशन हम देखि परिबा आ मैप तो समझते जानछ दैट वुड बी द यूएई रिलेशन आ सबटु इंपोर्टेंट मन रखिबो कि जदि तमे यूएई को कंट्रोल करछो यू आर आल्सो कंट्रोलिंग द पाकिस्तान बिकॉज़ पाकिस्तान गेटिंग मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम द यूएई स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस हम देखिबा जोटा मु कहितली कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक रे हम देखिबा कोन स्ट्रेटेजिकली लोकेशन बहुत इंपोर्टेंट तार लोकेशन देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जदि तमे अरेबियन पेनिनसुला को देखिबो सो हियर वुड बी इंडिया this is the UAE एठी रहबो ओमान UAE this side would be your Iran Pakistan so here is the location and this is whole the Gulf region Gulf of Persian region this side would be Red Sea and Africa ये रहबो तमर Red Sea तो ये रीजन पूरा ऑयल रे भरपूर ये रीजन होची ऑयल रे भरपूर कारण एठी एंट्री मारे कहले UAE है कि नाउ यू वुड पास टू द गल्फ ऑफ पर्शियन को आसे पड़िबो एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन होची जोटा मु कहतली देन इंडिया कैन आल्सो यूज दिस वन टू एंटर इनटू द हम केबा दैट इज अबाउट काजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ये सब रीजन को भी हम एपटे जाई परिबा और यू कैन हैव दिस ईस्ट वेस्ट दैट इज व्हाट सॉरी साउथ नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हम कहि परिबो जोटा डिस्कस करतले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कथा मु एबे कहि देली सो दैट इज व्हाई देन स्पेस कोऑपरेशन ये बहुत इंपोर्टेंट है तो स्पेस कोऑपरेशन करना ना यूएई जहाँ भी मतलब यूज करिवो ना स्पेस मतलब किसी सैटेलाइट लॉन्च करिवो जहाँ भी करिवो से इंडिया रो हेल्प नेबे इसरो रो हेल्प नेबे से कहारो इसरो रो हेल्प नेबे दैट मींस हमें कहबा सो इसरो रो जो इनकम ना दैट कैन बी एनहांस्ड because when UAE will comes to India for using the space हमें कहबा स्पेसक्राफ्ट जेमति तमर चाहे PSLV जो GSLV मैक है जो क्रायोजेनिक इंजन जा को में कुछ मैक 1 2 3 जा भी जो no. So if they are using your vehicles to launch the satellites, we will get more revenue. So that is why the space cooperation here, it's been written like the space cooperation between India and UAE gained quick momentum during the Prime Minister visit to the Emirates in 2015. Together, they have developed nano satellite that is NAFI-1, which was launched in the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, India, the Red Planet mission. So these they are coming together because they are having money in the bank and they are also launching the fast moon mission as well है ना सो सेटा भी ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ यूएई सहित हमर स्पेस कोऑपरेशन यूएई सहित हमर बायलैटरल कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक रिलेशन इन टर्म्स ऑफ टू कंट्रोल द पाकिस्तान कारण पाकिस्तान को ये इन्फ्लुएंस करि परिबो इफ यू आर हैविंग गुड रिलेशन विथ यूएई UAE that means you can also influence the Pakistan ताकू भी हमें इन्फ्लुएंस करे because this is one of the major power in this region so that हमको बहुत सारा impact plus you will have a good look on the Indian Ocean that is the West Indian Ocean रे जदि हमें देखबा if here is the UAE that means you can have a look in this part of the Indian Ocean रे हमें गोटे look भी रखी परिबा you will have a close look on this region what the development is happening in this region apart from that I2UT रो मेंबर अछंती दी जण ये भी तमे देखि परिबो I2UT रो मेंबर ओके UAE है ना ये रहिबो प्लस हमर जानछ फिल्म इंडस्ट्री भी हमर बहुत चले बॉलीवुड सेठी बहुत चले इवन बाइजू रो जते तमर जान एक कथा शायद समस्त जानथो बाइजू रो गल्फ रीजन रो सबटो बाइजू रो प्रेजेंस अधिक अपार्ट फ्रॉम इंडिया जति हम देखबा बाइजू इज हैविंग वेरी स्ट्रांग प्रेजेंस इन दिस रीजन प्लस शाहरुख खान तो जानछ ब्रांड एम्बेसडर इन दिस पार्ट ऑफ ओके ये तो समस्त जानछ द व्यू तो next our next important topic would be I2U2 now that is this is also known as the West Asia Quad ako kwaje this is also called as the West Asia Quad okay that means we are having two quad gote quad to jante India Japan Australia and USA and this would be the second quad here again the two players are the common player India and USA is the common player okay this would be I2U2 it was initiated in the October 2021 followed by the Abraham link accord between the what Israel and UAE सब ध्यान से देखियो अब्राहम अकॉर्ड ये तुमको क्वेश्चन पचारि पारे कि व्हाट इज अब्राहम अकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द अब्राहम अकॉर्ड अनुसार कोन पीस इज बीन एस्टैब्लिश बिटवीन इजराइल एंड UAE ये दी जण भितर पड़े नै कारण ये जानछ मुस्लिम कंट्री एंड दिस वन इज द ज्यूज कंट्री तो आंको भितर पड़े नै तेणुकरी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द मेडिएशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट of USA, they have signed Abraham Accord to establish the peace and cooperation between the Israel and the Muslim country UAE. So the deal issues and concerning the maritime security, infrastructure, transportation in this region and also religious cooperation, peaceful existence. तेणुकरी Abraham Accord जो साइन हो गला now the peace or the cooperation between Israel and the I would say UAE extended बा सेट को डेवलप हो गला ना तार बेनिफिट इंडिया एंड यूएसए को मिलला ना दे आर कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग द अनदर क्वाड जाको कोचे वेस्ट एशिया क्वाड एंड दिस इज व्हाट इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम कोऑपरेशन ये को होचे एटा गोटे इकोनॉमिक कोऑपरेशन दिस इज नॉट फॉर द मिलिटरी कोऑपरेशन और दिस इज नॉट ए हम कहबे ए गोटे ट्रेड ब्लॉक
or it would be better to use this sentence, trade block I2U2 is serving as a trade block rather than a आम कह मिलिटरी ब्लॉक ये गोटे ना मिलिटरी ब्लॉक ना आम कह वार पर्पज कराई दिस इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन विथ दिस प्लेयर तो आर बेनिफिट कौन हम तुमको सर आमको बेनिफिट कौन मिल आवर ड्रीम जो अच्छे ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को आमको साटिस्फाई करिया पड़िबो आवर ड्रीम अच्छी इजराइल रो में टेक्नोलॉजी आणुचे कोन आरओ टेक्नोलॉजी रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी दैट मीन्स जहाँ को आम कहूँ फ्रेश वाटर समुद्र पानी को आम कौन फ्रेश वाटर कन्वर्ट करके इधर यू कैन यूज इन द एग्रीकल्चर यूज कर कि ड्रिंकिंग वाटर यूज कर प्लस इजराइल टेक्नोलॉजी डिफेन्स टेक्नोलॉजी आम बहुत यूज करुचे तेणुक आम इजराइल सहित कोऑपरेशन बढ़िबो हियर व्हाट we will have cooperation with Israel जो हम कहली आरो टेक्नोलॉजी एथरे जमती चेन्नई सिटी रो जो वाटर डिमांड किए पूरा करूची दैट इज द इजराइल आरो टेक्नोलॉजी रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी so that here what would be the benefit that economic cooperation and the science and technology that would be there science and technology with Israel is one of the highly developed country in terms of the science and technology खास करके मु कभी मिसाइल टेक्नोलॉजी रे ना दुनिया रो सबुठ आगरे अछि इजराइल दुनिया रो nobody can touch even the feet of this Israel. They are very dangerous in terms of the missile technology in the world. They are having very fine guided missile system in the world which they can help us to us. Apart from that, we have that means हमको technology, missile technology हमको मिल जिवो, space technology हमको मिल जिवो, plus तमे जानि छ Pegasus कथा भी उठी थिला. So these are the cooperation हम कहबा with this player. तो वेस्ट एशिया रो हमको कोन मिलिबा बेनिफिट इकोनॉमिक जो ड्रीम अच्छी 5 ट्रिलियन दैट कुड बी अचीव द एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आमर हो पार दैट मीन्स वी कैन डेवलप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग वाटर सस्टेनेबल सिटीज अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट ये सब आम शिखिपर एम खास करके एंड इन्वेस्टमेंट वी विल गेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दिस प्लेयर यूएई आठू आमको कौन मिल आमको इन्वेस्टमेंट मिल कहीं आंक पाखे बहुत पैसा अच्छी है इन्वेस्टमेंट मिल तो एमती तुमको पचार सिग्निफिकेंस कौन कि व्हाट वुड बी द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्ट आम कह I2U2 इंडिया पे कौन है ना इंडिया पे देखो एडवांटेजेस कौन अब्राहम अकॉर्ड एडवांटेजेस कौन ना एंगेजमेंट डिपेंड विदाउट रिस्किंग द हम यूएई अब्राहम लिकट देख बेनिफिट आम कौन massive producer of the high technology out के पूर्व कहूँ technology India is a massive consumer of the market and it is a massive producer of high technology UAE कथा highly sought after the goods India will be benefited from this grouping हमको technology transfer हबो हमको मिसाइल्स मिल जो टेक्नोलॉजी मनी पॉलिटिकल अलायंस रहा सोशल रहिबो सो हमको आमे कहबा कि हां आमे गोटे ग्रुपिंग रो पार्टनर हबा इकोनॉमिक भी ग्रोथ करिवो तो ये कम कहबा दिस फास्ट हमर देखो फास्ट एवर वर्चुअल मीटिंग हेतला जो थरे इंडिया इजराइल यूएई यूएसए आस्तले दैट इज अ जुलाई 2022 तनु ये क्वेश्चन आसीबार चांसेस बहुत ही ज्यादा ओके नाइथरे कोन रहबा हमको क्लीन एनर्जी मिल जो जोटा मु कहथली इजराइल फूड सिक्योरिटी हे परिबो क्लीन एनर्जी ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन में कहबा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कहि परिबा है ना एथरे देखा UAE will invest 2 billion programs to develop the series of integrated food parks in India food parks में invest करिवे तो food parks will be incorporated in the state of art climate smart technology to reduce the food waste इस में कहि परिबा the number of benefit हमको मिलिबो then hybrid renewable मु आउट के पूर्व कहउतले के renewable energy production बढ़ी जिवो 300 gigawatt रो में wind and solar project करा जिवो बैटरी करा जिवो so that means हमर जो पंचामृत अछि जो टारगेट अछि जो हम 500 gigawatt renewable energy 50% of the renewable energy will be produced by the 2030 and by 2070 जो हमर कार्बन न्यूट्रल हबो 45% intensity of greenhouse gas को हमें reduce करिबा what on the basis of 2005 level रे so these are the जो target अच्छे that can be also achieved हमें करि परिबा plus जो वेस्ट एशिया रो जो क्वाड अछि यूए जदि मु यूएस को छाड़ देबी दे वुड बी द पार्ट ऑफ व्हाट दैट इज वन सोलार वन अर्थ एंड कोन थिला तमर वन ग्रिड रो पार्ट भी हिजबो से भी गोटे तमर जोटा कि वन सन वन कोन थिला वन सन वन अर्थ है ना वन ग्रिड ये जो तमर थिला तो आर भी पार्ट हिजबो तमर वन वर्ल्ड थिला साइड है ना तो आर भी गोटे पार्ट हिजबो दैट इज द इजराइल एर के माने भी आर पार्ट हिजबो सो दैट हमर रिन्यूएबल एनर्जी पे प्रोडक्शन बढ़ी जिवो एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल हिजबो साइंस टेक्स मिल जिवो इन्वेस्टमेंट मिल जिवो सो नंबर ऑफ बेनिफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम द I2U2 है ना देन हम देखबा
The sixth area, then apart from that what would be the common mutual interest अछि strengthen the economic partnership रहिबो. The state cooperation area बहुत सारा अछि जेमति कि space हेगला, health हेगला, food security, transportation, energy, water कथा already मु discuss कर सेछि. And also you can say the defense technology as well. Defense plus India can use this group auri ochi benefit answer sunibo other benefit also I2 U2 apart from the water energy transportation space health food security you are getting other benefit to you to influence the WTO influence kari paribo you can influence the world body like the World Bank IMF and सबुठु हेबो UNSC सबुठ important रहेगा UNSC. Your permanent seat demand for the UNSC could be fulfilled through this body as well. They can. I am not saying that they are the sole body to give you that, but that could be the leverage can be done through this. The leverage तमें नहीं परिबो. Will have the more supporters. Economy grow करी परिबो. You will have the market as well because gradually India market हमारा market share भी बढ़िबो. कारण India is also one of the largest producer of the goods and services. तो इंडिया ग्रेजुअली ये जो मार्केट अच्छी जमती यूएई कथा नहीं जाओ यूएई जो इंडस्ट्री तांकर जो जेते क्लोथ अच्छी जेते भी क्लोथ कथा नहीं जो फूड बेवरेज दे आर गेटिंग फ्रॉम इंडिया सेमाने हमको ऑयल दउछन वी आर सप्लाइंग वाटर बेवरेज वेजिटेबल्स फूड्स एक्सेट्रा यूएई so यूएई also good market for us. Okay, so these are the benefits we are getting from the I2 U2 रो हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलुଛି हमको वाटर एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन हेल्थ टेक्नोलॉजी डिफेंस आम स्ट्रेटेजिक रिलेशन आम कहीपर जमी इंडियन ओशन कथा नहीं जाओ है ट्रेड बढ़ो लुक वेस्ट पॉलिसी आम कहले कि लुक वेस्ट पॉलिसी गेटवे आसूची नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर पार्ट हो पार ऑयल सिक्योरिटी आम कह जो एनर्जी सिक्योरिटी that is the what energy security can be in what ensured hope you are getting me है ना ये सब हमारा सब I2 U2 द्वारा है परिवार then comes to the FTA India UK FTA कहले free trade agreement तो free trade agreement आम से कंट्री सहित करूँ जहाँ सहित आमर ट्रेड डेफिसिट कम अच्छी एमती ना कि चाइना सहित करूँ जहाँ सहित 125 बिलियन डॉलर ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट चलती मोर देन 100 बिलियन तो ता सहित करूँ ना जो कंट्री सहित वी आर हैविंग good trade relation where we are having the benefit or going to have the benefited from this with them we will do so that trade deficit minimize हो trade deficit बहुत ही ज़्यादा बढ़ी न जाओ. तो ब्रेक्जिट कथा तो समझते जानते बिकज जो यूरोपियन यूनियन अच्छे से अलग हो जाए देखिए यूके अलग हो जाए सो दैट इट नीड टू डेभलप एवं कौन कर जेहेतु से ब्रेक्जिट रू अलग हो जाए ना एवं से सब देश सहित निजे निजे पुणी बायलेटरल रिलेशन के एस्टाब्लीश करें पड़ो तेणु करके आम देखा सो नाउ that is आम कहबा the Indian UK has earlier unveiled the plan to conclude the FTA by the October 2022 but the trade deal has run into the problem because of the British Home Secretary Suella Braverman's controversy comment on the agreement could lead to the increase of the migration from India कि migration बढ़ी जीवो बुझि पड़छ कि तो पोस्ट ब्रेक्जिट रे हम देखिबा यूके पई गोटे मुंड व्यथार कारण कि हाउ टू डील द पर्सनली विथ द डिफरेंट कंट्रीज तो फ्री ट्रेड जदि इंडिया करूची यूके सहित कौन हम कारण इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया एंड यूके 18th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर टू इंडिया सी द डिफरेंस ना दिन थिला यूके हमको रूल करथिला एबे इकोनॉमिकली इंडिया इज रूलिंग यूके इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन यूके कहले इंडिया माने एफडीए सबटू इंडिया रो सेकंड हाईएस्ट जाउची है ना पार्टनर ऑफ इंडिया एंड थर्ड as an investor in India तो इंडिया तांको पई सेकंड से माने आम पई थर्ड आम पई ताले फर्स्ट के सिंगापुर मॉरिशस एंड थर्ड इज द यूके तो फर्स्ट होची तमरो सिंगापुर इज द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट असोची सिंगापुर फॉलोड बाय द दैट इज व्हाट मॉरिशस होची सेकंड है ना इट वुड बी द फर्स्ट सिंगापुर मॉरिशस यूके द हाईएस्ट एफडीआई ये तीनटा कंट्री रो हमर असोची यूके कंसर्न ऑफ द इंडिया टू आम देखे इंडिया कंसर्न कोन यूके इज कंसर्न but the India is trying to extract a few further concession आम देखि परिबा so that आमरो आउट की इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ी जिवो यूके सहित इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़िबो जो ब्रेक्जिट डील हैला इंडिया चाहे तारो बेनिफिट इंडिया को मिलो ब्रेक्जिट डील पर एबे कोन सेपरेट डील करबो यूके डिफरेंट कंट्री सहित तेणु करके इंडिया चाहे ता सहित गोटे भल फ्री ट्रेड हो सो दैट आम कौन आम इकोनॉमी को आम मोबिलाइज कर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़िबो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़िबो So 2005 रे joint economic and trade committees गोटे कराउतला inaugurated in the New Delhi to boosting the two-way bilateral है ना then main export UK रु कोन आसुची रेडीमेड जेमते कि हमर टेक्सटाइल आसुची जेम्स एंड ज्वेलरी आसुची इंजीनियरिंग गुड्स पेट्रोलियम एक्सेट्रा सो फोर्थ हमरे आसुची
तो ये आम देखा देन इंपोर्ट आम कौन करुचे इंपोर्ट फ्रॉम द यूके टू इंडिया जमी सेमी प्रेसियस स्टोन्स that is metalliferous metal scrap engineering goods professional instruments ये सब आसुची बट इंडिया कौन कौन दउची स्पाइस दउची इक्विपमेंट दउची केमिकल दउची पेट्रोल दउची पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज्वेलरी जेम्स टेक्सटाइल्स ये सब रेडीमेड जिनस इंडिया दउची दैट मीन्स इंडिया पई यूके गोटे ठीक ठाक मार्केट आम कहि परिबा सो जदि आम फ्री ट्रेड साइन करूचे यूके सहित वी विल हैव ए मार्केट शेयर आमर बढ़िबो बस तुमको दुनिया रे मार्केट शेयर बढ़िबार अछि if you wants to be the 5 trillion economy you need to have the more market more free trade agreement to reduce the trade deficit and make in india को सक्सेस करबा खाली मेक इन इंडिया जेतो हम कहूचे कि मेक इन इंडिया कोन पे खाली मेक इन इंडिया कोन टू कंज्यूम इन इंडिया ना मेक इन इंडिया टू कंज्यूम इन इंडिया एंड आल्सो टू गिव द वर्ल्ड एज वेल दैट मीन्स इंडिया को हम गोटे मैन्युफैक्चरिंग हब करबा हम वर्तमान कथा नियो वर्तमान तमरो जदि देखियो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कमी कमी जाउची बा मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट आमर कमी कमी जाउची कोन पे ना आमर बाहर जो वर्ल्ड इकोनॉमी वर्तमान स्लो चलची सेति आमर एक्सपोर्ट कमी जाउची इन द सर्विस सेक्टर यूके इज द लार्जेस्ट मार्केट इन द यूरोप फॉर द इंडियन आईटी सेक्टर इंडिया तो जानिछो आईटी सेक्टर रे बहुत महान मेडिसिन आईटी सेक्टर रे इंडिया तो महान जानिछो दुनिया रे तन करी इंडिया को दरकार मार्केट आईटी मार्केट हमको यूके रे मिल जिवो देन एफडीआई मो तो ऑलरेडी कहि दिछि एफडीआई मिल जिवो तुमको द टॉप sector attracting the FDI from the UK, the petroleum, ports, services, road, highways, and computer softwares. FDI asuchi and FDI UK ro asuchi India ko third largest FDI in terms of FDI रे सब Singapore, Mauritius, and UK. Growth of multinational companies भी हमें देखो धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाउची. Bilateral trade भी बढ़ी बढ़ी जाउची. Now see the bilateral trade. In fact, the India has trade surplus with UK and USA as well. इंडिया रो ट्रेड सरप्लस दीटा कंट्री सहित सेति को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करिवो और चाइना सहित करिकी त लॉ उल्टा हि जबो सो इंडिया हैड ए टोटल ट्रेड हम देखिबा 17.5 बिलियन इन द 2022 द एक्सपोर्ट टू द यूके हम देखिबा 10 बिलियन and 7 billion that means the what import so we are having the trade surplus so this is also good sign ki if you are doing the FTA the free trade agreement there is very less chance that the trade deficit will increase from the side and India would be in the benefit side if the free trade agreement is going to be signed. So this is the free trade agreement hame dekhile West Asia policy hame dekhile I2U2 dekhile now we have gone through also the what that is the SEPA hame dekhile with the UAE. Now we will come to the other current affair. Other current affair jodi hame dekha look east policy. So look east policy hame dekha now jetale koha look east policy and the act east policy. Now there was a time when we were talking about the look east policy है now the time is to act east policy now the what act east policy वर्तमान act पाइन करा जबो वर्तमान और look वगैरह किछ नहीं now you have to act east policy okay so that means since 1991 the strategic shift of India perspective of the world under the last government जदि हमें देखा look east to act east हे जायछि तो वर्तमान और look east नहीं now act करिवार काम आछि आगुरु थिला कोन लुक करिबा कि हां कोन चलछि हम देखिबा whether we should increase the cooperation economic and the defense cooperation with the East Asia country or not now this is the time to act east policy तुम कहबा act east और look east भितर डिफरेंस कोन act east अर्थ हला हमें काम करियो जेंति कि वियतनाम सहित फॉर एग्जांपल मु कहछि वियतनाम रे तुम जानछो कि ONGC तमरो ONGC काम करूछि देन आमे तांकू कोन जो 250 किलोमीटर हमर जदि हम देखबा जो कोन दोचे हम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हम दोचे 250 किलोमीटर जाय जदि हम देखबा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल डिफेंस हम देखे हाइड्रोकार्बन कोऑपरेशन विथ वियतनाम और जदि हम कहबे जेंति ONGC वगैरह कंपनी जाके सेठी ड्रिलिंग करूची है ना तो डिफेंस कोऑपरेशन एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ी बढ़ी जाउची सो दैट मीन्स हमें एक्ट करूचे रिलेशन को आउट के हमें नेक्स्ट स्टेप को लेके जाउचे तो जेते बेले तुमको कहा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी दैट मीन्स जेते भी साउथ ईस्ट एशिया रा कंट्री अछि तांको सहित से रिलेशन टाको लिखि देबो जेमति कि हमें वियतनाम सहित रिलेशन कोन थाईलैंड सहित रिलेशन कोन म्यांमार सहित कोन इंडोनेशिया सहित कोन सिंगापुर सहित कोन सो एमान को सहित जहा जा होची दैट ऑल टुगेदर नोन एज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी ओके सो लुक ईस्ट पॉलिसी रो हमें गोटे स्टेप आगो को जाइचे 2014 रो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आसिला परे ताको कहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी अंडर कालादाम प्रोजेक्ट वगैरह तुम आसुची एशियन हाईवे प्रोजेक्ट आसी जिवो ब्रह्मोस कथा तुम लिखि परिबो ONGC कथा लिखि परिबो चांगी नावल बेस सिंगापुर जोटा इंडिया को लीज रे देछि सेटा लिखि परिबो सिंगापुर इज द लार्जेस्ट
एफडीए आसुची ताकू लिखि परिबो इवन तमे जानचो कि वर्ल्ड स्किल सेंटर डब्ल्यूएससी जोटा कि भुवनेश्वर अछि से भी हमर कहा सहित मिसिकी आमे करूचे सिंगापुर सहित मिसिकी करूचे तो नंबर ऑफ एरियाज अछि तब जोठी लिखि परिबो even we are also supporting these country in terms of the south साउथ चाइना dispute आमे आको सपोर्ट करो कोठी ना यूएन रे आमे आको सपोर्ट करो है ना सो नंबर ऑफ एरियाज अछि हम देखबा सांग्रीला डायलॉग जोटा कि जियोपॉलिटिकल डायलॉग जोथर कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भाग नियंती है ना सांग्रीला डायलॉग हम कहबा तो आमे देखबा एक्ट ईस्ट पॉलिसी रे कोन कोन आसुची ना एक्ट ईस्ट पॉलिसी कोन पई जदि मु गोटे क्वेश्चन पचर त मनकू कि व्हाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी एनीवन फ्रॉम योर साइड व्हाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी what would be the benefit anyone from your side why act ईस्ट पॉलिसी okay to develop the northeast region very good okay fine I got it any next point okay इंडो पैसिफिक रीजन को आम डोमिनेट करवा चाइना को कंट्रोल करवा एंड चाइना रो एमाने होचंती चाइना रो शत्रु दुश्मन very obviously we will have a market no doubt एंड आमे कोन करबा हमर जो पॉलिसी अछि चाइना को घेरियर अछि ना तो चाइना को चारियाड घेरियर अछि से हमको घेरुचन आमे ताको घेरिबा टू कंट्रोल द चाइना है ना तो चाइना को आमे कोन करबा कंट्रोल करबा कंटेंट करबा कंट्रोल एंड कंटेंट करबा एंड आल्सो कोन ग्लोबल ऑर्डर को एस्टैब्लिश करि परिबा कोन करबा में ग्लोबल ऑर्डर को एस्टैब्लिश करबा जेमति चाइना करूची मु मानिबिनी अनक्लोज को मु माने नाही अनक्लोज कोन सी लॉस इंटरनेशनल सी लॉस जाको मु माने नाही समझते जानते हेक कथा हेक जो वर्डिक्ट देथिला इन फेवर ऑफ कार दैट इज द फिलीपींस बट चाइना तको मानिया पे इनकार कर देला तो दैट मींस इंडिया को एक ग्लोबल ऑर्डर को एस्टैब्लिश करबा सो दैट मींस वी आर डीपनिंग रिलेशन टू डेवलप द नॉर्थ ईस्ट टू कंटेन एंड कंट्रोल द चाइना एंड आल्सो यूएसए हमको हेल्प करूची हाँ कि नहीं then also to free trade I mean ensure kariba that the south china sea must be a free trade area a free navigated area global order must be established and peaceful cooperation obviously jo market katha tamane kala this is also one of the largest market and densely populated region as well and we will get also resource bhi हमको मिलेगा सबसे important katha this region also having the oil reserve the south china sea also having the oil reserve indonesia malaysia these countries are known for the oil and खास करके brunei एमान के पाखरे oil reserve अछि and we will also get the what diversification of the energy resource of India that is also that means when we talk about the energy security we must talk about the diversification of energy and the production of energy हमें देखिबा so आमे खाली कोन वेस्ट एशिया ऊपर डिपेंड करबा ऑयल पई we must diverse our हमको सोर्स को डाइवर्सिफिकेशन करबा तो एबे एई किछि दिन तळे गोटे प्राइम मिनिस्टर ई कथा कहले के डाइवर्सिफिकेशन and गोटे कौन से वाट हमर मन पड़ोनी तो these are the benefits if you are having a deepening the relation or the artist policy तमे करछो these are the benefits okay these are the benefits you are going to have so let's see here now the actist policy ro kichi example देखबा actist policy of best example is the Kalatam project multimodal project will be started from the Sitwe port of that is the Myanmar and it will move to the Aizawl which is comprised of water plus road plus rail and it will have number of bridges as well so this Kaladam project comprises of here it will have the waterways roadways railways kale multimodal transit system or the transportation system from Kolkata to Naikami Aizawl we will enter into the Sitwe and then we will move to the Aizawl through the water rail and road jahaku कहली so that हमें कौन जो चिकेन नेक को हमें बाईपास करबा इन केस के जदी इंडो चाइना वार हेला चिकेन नेक ब्लॉक हेगला देन वी विल हैव दिस रूट टू ऑपरेट ओके ये भी कोटे हम करबा प्लस हमें को वाटर रे जदी ट्रांसपोर्टेशन करूचे कॉस्ट जानचो वाटर इज द लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट so that it would help us to develop the northeast region as a whole and also we will have the good relation with the Myanmar as well Myanmar with relation bhi badhibo and Myanmar is the gateway like the UAE is the gateway to enter into the West Asia or the Middle East Myanmar is the gateway to enter into the Southeast Asia okay because Myanmar also the part of the ASEAN countries of partner country तो ये रहबो तुमको है ना लैंडलॉक मिडिल ईस्ट को हम सॉरी नॉर्थ ईस्ट को हम गोटे हमें बांग्लादेश को बाईपास कर देबा ये भी आसीबो ये गोटे हमें पॉइंट को हमें देखितले नाउ कम्स टू द व्हाट
Further, the government also sanctioning the project जेमती हमरो देखबा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करा जिवो है ना वाटर ट्रांसपोर्टेशन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड दैट ब्रह्मपुत्र ऊपर कोन अछि द नेशनल NW2 अछि नेशनल वाटरवेज 2 अछि ब्रह्मपुत्र ऊपर साइड टू धुबरी एंड NW1 अछि तो कह हल्दिया ठु नै कि हम कोन इलाहाबाद NW1 तो ये भी तुम जानछो ए धुबरी अछि देन NW6 अछि बाराक रिवर ऊपर एटा कोन 16 लिखा अछि 6 अछि NW6 अछि बाराक रिवर ऊपर 16 जदि हेइथबो पर कथा so that is also there so waterways हम डेवलप करबा देन जापान आमे कहबा इंडिया आल्सो ये तो खाली म्यांमार सहित गला सेमती आमे थाईलैंड सहित कोऑपरेशन डेवलप करूचे वियतनाम सहित मु कहली ब्रह्मोस कथा कहली वियतनाम सहित हाइड्रोकार्बन रो कोऑपरेशन कहली बिकॉज़ वियतनाम रो चाइना सहित पड़े नाही तेणु करके आमे देन जापान सहित हमर कोन सेपा अछि अगेन सेपा दैट इज कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट पैक्ट आमे कहत का सहित जापान सहित प्लस जापान होची क्वार्टर मेंबर तो जापान सहित आमे रिलेशन भी बढ़ौचे जोटा कि हमको एक्ट ईस्ट पॉलिसी रो एग्जांपल जापान सहित आमे देखि परबो एस्टैब्लिश होए देखो that is the India-Japan Act East Forum established 2017 provide the platform for the India-Japan collaboration the northeastern region और जब जापान तब जानते हैं जो हमारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है जो किंबा तुम्हारा तो वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर कथा नहीं जो एक्सप्रेस हाईवे कथा नहीं जो इसबु कोन इन्वेस्टमेंट करके रखी जापान इंडिया रे तो इंडिया रे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखी जापान तो है ना वेरियस जमते कि हमरो देखो जापान कोथरे इन्वेस्ट करूची कनेक्टिविटी हाइड्रो forest management, water supply, sewage, skill development, Japanese language education system as well. ये जापान सहित हमें रिलेशन देखिबा जापान कारण इकोनॉमिकली हमको बहुत हेल्प करूची देन कम्स टू म्यांमार कथा हम ऑलरेडी डिस्कस कर दी कारण ओपन बॉर्डर अछि हमर बॉर्डर शेयर करूची आउ नेबरहुड पॉलिसी रे मध्ये आसुचंती नेबरहुड फास्ट पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को स्लोगन समस्त जानिचो सेइथरे भी म्यांमार आगे आसी जिवो हां म्यांमार एबे ठीक टेंशन चलची मिलिटरी रूल चलची जो सुकी वर्तमान तो जानचो पुनी ताको एनहांस कर देले जो इंप्रिजमेंट टाइम टाको जो डेमोक्रेसी खत्म हो जाइची सेटा गोटे हम पई कंसर्न रो टाइम बा हम पई गोटे कंसर्न बट जहां भी हो वी नीड टू हैव द गुड रिलेशन विथ द बिकॉज़ अदरवाइज चाइना ताको कैप्चर कर देबो बुद्धिस्ट का हां ना रिलीजन अछि कल्चरल स्पिरिचुअल इवन बॉर्डर हार्ट मध्ये थाई सेथरे बॉर्डर हार्ट थाई देखो दिस रिवीजन सेशन वुड बी लिटिल बिट फास्टर एंड ओके दोस हु हैव द फास्ट टाइम listening to me they might have difficulties at the difficult time to get me but kon kora jibo ko किसी कर परिबनी मो आई हैव टू नीड गो टू फास्ट एज वेल चाइना फैक्टर को हमें अवॉइड करिया पे चाइना कहना म्यांमार रे जो वर्तमान गवर्नमेंट अछि मिलिटरी गवर्नमेंट दैट इज सपोर्टेड बाय द चाइना एंड इंडिया ऑलवेज सपोर्टेड द व्हाट डेमोक्रेसी जानछो बिकॉज़ वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड तो हमें जानिबे सब डेमोक्रेटिक व्यूज को हमें सपोर्ट करिवा तो जा भी हो तो सेति पे हमें कोन करिवा चाइना फैक्टर अछि तेणु करके यूएनएससी हमको दरकार यूएनएससी रो भी दरकार हम वोट बस ये सब को हमें लिखिबा आसियान सहित मु तुमको गेटवे रहिबो ओएनजीसी कथा मु तुमको ऑलरेडी कहि देछि है ना एजुकेशनल कोऑपरेशन होची नालंदा यूनिवर्सिटी सहित ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दीज आर द थिंग्स और एशियन हाईवे मध्ये हमें करूचे एशियन हाईवे पता नहीं एथि लिखा अछि कि नहीं कि देखिया पड़िबो द बिगेस्ट इशू ऑफ द कनेक्टिविटी हमें कहबा तो ताको भी सॉल्व कराउची है ना नॉर्थ ईस्ट को हमें कनेक्ट करा बाय यूजिंग द म्यांमार को यूज करके हमें ओके ये सब हमें हेपो इंडिया म्यांमार अच्छा now comes to the how India has fared well with her relation that is fared well with the relation with the Japan as 2022 highlights the some of the recent events Japan that is simple हमें कहबा कि India Japan relation तो कोविड-19 रे तमे देखियो कि इंडिया जापान रो रिलेशन कोन चली छी तो 70th एनिवर्सरी और सबुठ इंपोर्टेंट कथा जो तमरे शिंजो आबे चली गेले एंड शिंजो आबे रो जदी हमें कंट्रीब्यूशन करबा जो क्वाड वर्तमान जो क्वाड अछि क्वाड फॉर्मेशन रे शिंजो आबे रो जो मतलब कंट्रीब्यूशन दैट इज इमेंस सो अनफॉर्चूनेटली तांकर जो तुम जानछो तांकर डेथ ही जाई थी असैसिनेट करे एथला तांको ना ना तो जा भी हो सेफ पॉइंट बेसिस रो भी तुम लिखि परिबो कि डिप्लोमेटिक रिलेशन हमें देखबा शिंजो आबे और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के भितर जो माने हमें कहबा जो रिलेशन ता बहुत भलो फ्रेंडशिप थिला दी जन करो खास करे मु कहबी कि 70th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द टू नेशन recent visit of the prime minister that is what Fumio Kishida in 2022 for the annual summit the roadmap deepening of the strategic and global partnership between the two countries प्रेजेंट टाइम रे रिलेशन देखबा लुकिस्ट पॉलिसी को हमें आर्टिस्ट रे कन्वर्ट कर देले दैट मीन आर्टिस्ट पॉलिसी आसीबो न्यूक्लियर पॉलिसी तुम देखि जाओ
पोखरण 2 टेस्ट होता इंडिया रे हाँ अरे सर जापान तुमको से थोड़ा हेल्प करी है ना जापान कौन कहले द बिटनेस ऑफ द बायोलिटिकल हमर टिके जापान भी कहले कि अरे एनपीटी साइन कर दियो एनपीटी तो जानते नॉन पॉलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर टीटी तो जानते नॉन पॉलिफरेशन कहले नो पॉलिफरेशन कहले आ मल्टीप्लाई करि परिबो नहीं जा भी उसे टाइम गला एबे वर्तमान वी आर हैविंग गुड रिलेशन 5 ट्रिलियन एन हमको देछि देखो that is Kishida announced Japan will invest 5 trillion yen that is the 42 billions in India over the next 5 years हमको तो दरकार इन्वेस्टमेंट ये भी देखा the leader also welcomes to the signing the exchange note of 300 billion yens जोटा 2.5 billion loans to India को soft loan दउछंती these are the what soft loan India को strategic 2+2 डायलॉग अछि है ना ये भी बहुत इंपोर्टेंट strategic है ना कहीं 2+2 आमर क्या सहित अच्छे जापान सहित अच्छी ऑस्ट्रेलिया सहित अच्छी यूएसए सहित अच्छी एंड शायद फ्रांस सहित भी आम 2+2 डायलॉग जब आम देखा ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग माने इकोनॉमिक एंड डिफेंस बोथ डायलॉग्स आमर ये इकोनॉमिक एंड डिफेंस तो ये भी आम कहीपर कौन ना टू काउंटर चाइना ऑब्वियसली नो डाउट चाइना को काउंटर करवा से स्ट्रेटेजिक रिलेशन आम करके रखीचे देन इन्वेस्टमेंट कोलाबोरेशन रहिबो ऑब्वियसली यूएसए कॉमन फ्रेंड रहिबो आमर कॉमन फ्रेंड इज द यूएसए no doubt quad member ये भी कहि परिबा then from 2000 until 2022 जाय देखिबा इन्वेस्टमेंट केते करिछि 35.125 billion Japan rank 5th among the largest source of investment to India मु तुमको आउटी के पूर्व कहथली वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बाय इकोनॉमिक कॉरिडोर देन मु तुमको कहथली मेट्रो जो हमर बुलेट ट्रेन कथा नै जो मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कथा नै जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कथा नहीं जो चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कथा नहीं जो एंड सम ऑफ द अदर मेगा प्रोजेक्ट इंडो जापान रिलेशन जेतरो आसुची these are the some of the example you have to write the like this one that Delhi that is what Mumbai Ahmedabad high speed rail हेगिला western dedicated freight corridor कथा नहीं जो Delhi Mumbai industrial corridor कथा नहीं जो and industrial township कथा नहीं जो Chennai Bengaluru industrial corridor कथा नहीं जो these are the high mega project is been invested quad कथा already हमें discuss कर देचे कि जापान quad member अछि strategic relation 2+2 dialogues अछि USA common friend and control काको control करिबा the common enemy is the China Malabar exercise रो part तमे जानछो 1992 रे Malabar exercise between USA and India start हितला Malabar coast रे gradually आसिला तमरो ताथरे जापान मिसिले ऑस्ट्रेलिया मिसि के हेगला क्वाड है ना डिजास्टर मैनेजमेंट रे हमर मध्य disaster management we are also helping like the an agreement is been reached between the earthquake disaster prevention karan Japan is very much known for the disaster management technology disaster management ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦରକାର ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କରିକି Indian Institute of Technology Roorkee has signed the agreement with the what Fujita Corporation for the disaster management related to the earthquake and present day भी ଚାଲିଛି disaster କୋଠି Turkey and Syria ରେ India Japan that means ministerial conference 2016 जो थे हमारा 30,000 soft floor traders ये जहाँ भी देखो why Japan needs for India कौन ପାଇଁ दरकार हमको why Japan needs India जापान को कहीं की इंडिया दरकार because of origin or the aging population जापान रो old age जापान रो average population रो जदि हम average age देखबा 82 years 82 to 84 होची average year जोटा कि life expectancy जाको हम कहूचे that means old age population अधिक जाटा कि गोटे problem आ इंडिया सहित रिलेशन रखले कम कना इंडिया पाखरे यूथ कैपिटल होची इंडिया और जापान होची ओल्ड रो लोक संख्या सबुठ अधिक तो ये देखा जुओ जापान हैज नेवर एडवर्सर टू इंडिया अब जापान एबे इंडिया को केबे भी प्रॉब्लम रे पकई नाही स्ट्रेटेजिक रिलेशन रखीची ये हमको बेनिफिट हमको जापान ठु मिलिबो सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड करूची से नावल एसेट हमको दबो इन्वेस्टमेंट हमको दबो स्ट्रेटेजिक वैक्यूम फिल अप करबो बिकॉज़ वी कैन यूज द जापान टू counter the China in the South China and East China Sea as well. So number of areas होची जोठी के हमें use करी परिबा जे जापान को और जापान needs us we also needs them to counter and that would be also helpful for the both the nations. Both nations पे हमको कौन करिबा जो help है जिवो. So जापान को हमें देखिबा that means जापान को हमें investment angle रो देखिबा कि from the investment side how much investment is they are doing from the defense side from the economic from the human resource, from the technology, from the quad, Malabar exercise, and also to economic engagement अच्छे था तो हमें जापान को different angle रो में नहीं कि देखी परिवा क्या what are the areas.
recent trend हम देखिवा Japan has objected Russia's plan to hold the maritime component of the Vostok close to the northern territories. अब देखिए Kural Island से देखिवा में disputed आपको मु देखिबिनी ये point this is not India stand कनो India abstained from the sending of warships to the exercise. India कहला भाई तम भितर झगड़ा आइला आमे जीवो नाही बुझबत नहीं. तो these are the आमे कहबा development way forward. तो ये रहिबो आजिर डिस्कशन एतिक रहिबो है ना. मु काली तमरो आउ थरे स्टार्ट करबी जहाँ भी अछि काली आउ टिके नेबी बिकॉज़ टिके आज राती हे गेलानी.